क्या भारत में लोकतंत्र को एक साजिश के तहत खोखला किया जा रहा है? क्या वोट अब जनता की ताकत नहीं बल्कि सत्ता का खेल बन चुके हैं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और भाजपा को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार आरोप गंभीर है और सीधे देश की लोकतांत्रिक नींव को हिला देने वाले हैं। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में रहस्यमयी तरीके से 40 लाख वोटर जोड़ दिए गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सभी वोट लोकसभा चुनाव 2025 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच जोड़े गए और इनका मकसद भाजपा को फायदा पहुंचाना है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को इन फर्जी वोटों की जानकारी और प्रमाण इकट्ठा करने में 6 महीने लगे। इनका दावा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। लाखों नए नाम बिना पारदर्शिता के जोड़े गए और ये सीधे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। राहुल ने एक बड़ा सवाल उठाया कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ गया। उनका कहना है कि यह सब भाजपा के लिए किया गया है और चुनाव आयोग इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आधिकारिक रूप से सवाल पूछे हैं, लेकिन अब तक एक भी जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता अब सवालों के घेरे में है और उसकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग वाकई भाजपा के लिए काम कर रहा है? अगर नहीं, तो वह इन गंभीर आरोपों पर चुप क्यों है? क्या जनता के वोट से नहीं, अब मैनेजमेंट और जोड़ तोड़ से तय होती है सत्ता? क्या लोकतंत्र की गाड़ी पटरियों से उतर रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये आरोप देश की चुनावी व्यवस्था पर गंभीर खतरे की घंटी है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत। Foundation of our constitution, everything that our constitution stands for is based on the fact that one person gets one vote, right? And so when we're looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing. You saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था। बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस।
ये महीनों के लिए, why is it taking so long and why is there choreography? Suddenly the Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years. Caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम. So, we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The Election Commission refuses, absolutely refuses to give us the voter list. Doesn't give it to political parties, gives it in a form where it simply cannot be analyzed, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths, no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. But we still didn't have proof. We were still in the zone ki, yes, we have Maharashtra, we have proof at the larger level, state level, we can see these voters have come, but ये नहीं मालूम ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है. So we put together a team,
And we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper. As you can see, you have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice, or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say, भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है. So then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है. That's the process, and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data. Because they don't want us to look carefully, right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, not